Hello everyone, it's 5 in the morning on October 31st. So good morning. और हम लोग दिवाली रोड ट्रिप के लिए निकल रहे हैं. The mood is set and we are all ready for an adventure. So our first stop was रामलाल स्वीट्स, लेकिन वहाँ बहुत जल्दी पहुँच गए तो ब्रेकफास्ट तो नहीं मिल पाया. So we settled for चाय and biscuits. कोल्ड मॉर्निंग में वो चाय सच में परफेक्ट थी, काइंड ऑफ. एंड As we drove, fog इतना थिक हो गया था कि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था. एकदम प्योर मिस्ट्री मूवी जैसा फील आ रहा था. Around 6:30, we caught a glimpse of the sunrise. झारखंड आए और धुसका नहीं ट्राई किया तो क्या किया. हमारा खागरा में हमारा रियल ब्रेकफास्ट स्टॉप था और वहाँ का हमने धुसका ट्राई किया. काफ़ी अच्छा था. धुसका इज सर्व्ड विद सब्जी, आलू और चने की सब्जी के साथ इसे सर्व किया जाता है. काफ़ी सॉफ्ट एंड डिलीशियस था. नेतरहाट वैली में जैसे हमने एंटर किया, हमें काफ़ी बंदर भी देखने को मिले और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, बट उन्हें देख करके बहुत अच्छा भी लगा अपने नेचुरल हैबिटेट में. और काफ़ी छोटे छोटे भी थे, रोड पे घूम रहे थे. Here the troop of monkeys was sitting along the road railing. एकदम चिल मोड में बैठे हुए हैं. और फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक जगह लैंडस्लाइड हो गया था और एक बड़ा ट्रक आगे आ गया. थोड़ा लेफ्ट राइट गाइड करते हुए उस ट्रक को निकलने दिया और हमारा लिटिल रोड एडवेंचर भी हो गया. और यहाँ मैंने ड्राइविंग में अपना योगदान दे ही दिया. See, I'm not just a passenger princess. I do help you, Mr. Freddy. और just kidding. And यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था. अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है. नीचे हमारे तो थोड़ा सा डेब्री था वहाँ पे. So finally हम नेतरहाट में हैं. Netarhat is a hill station in Latehar district in the Indian state of Jharkhand. It is also referred to as the Queen of Chota Nagpur, and the hill station is among the highest points of the Chota Nagpur plateau. The best time to visit Netarhat is between October and March.
took some shots, clicked photos, and even danced a bit. ये है कोयल व्यू पॉइंट। यहाँ से रिवर का व्यू एकदम सीरीन है, लाइक टाइम जस्ट स्टैंड स्टिल। और वहाँ पे आपको रिवर दिख रहा होगा। हम लोग बहुत हाइट पे हैं। सो अराउंड 5 in the morning we left from रांची और 9:45 तक हम लोग नेतरहाट पहुँच गए थे। यहाँ पहुँचने के बाद हमने सारे जगह ऑलमोस्ट घूमे, बट आई कुडंट कैप्चर मच। और ये कुछ कुछ शॉट्स हैं हमारे वेयर वी वर मेकिंग मेमोरीज एंड डूइंग सम क्रेजी स्टफ्स। It was Freddy and Papa's first adventure to Lodh. Let me tell you a few things about this waterfall. It is a waterfall in a mid-forest of Palamu Tiger Reserve, South Division of Netarhat district in Jharkhand state in India. It is also the highest waterfall in Jharkhand and the 21st highest waterfall in India. This is the picture of the day. यहाँ हम तीनों हैं और लौटते हुए यहाँ पे भैया ने स्टॉल लगाया था फॉल के रास्ते पे, तो हमने वहाँ से लेमन टी पिया, मसाला लेमन टी, एंड बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग लगा। और फिर हम वहाँ से निकले एंड अराउंड 3:30 हम महुआ डांड में रुके, जहाँ पे हमने लंच किया। एंड यकीन मानिए वहाँ बस हमें एक ही ढाबा दिखाई दिया एंड इसका खाना काफ़ी अमेजिंग था। इस ढाबे का नाम है अपना ढाबा। सो अगर आप लोध फॉल्स जाते हैं तो इस ढाबे पे जाकर के लंच करें। इनका मील काफ़ी डिलिशियस था। महुआ डांड से गुमला आने में 2 आवर्स का टाइम लगा और यहाँ से हमारा जर्नी और 3 आवर्स का बचा हुआ था। एंड गुमला पहुँचते ही we were greeted by beautiful Diwali lights twinkling all around us. The festive vibe were in full swing, making the perfect end to our trip. Every corner was filled with twinkling decorations and the festive spirit was alive all around us. Seeing the bright colors and sparkling lights was a warm welcome after an incredible adventure. And that's a wrap on our Diwali road trip to Netarhat and Lodh Falls. From foggy sunrise and mountain views to Jharkhand's famous Tuska and the majestic Lodh Falls, every moment was an adventure. Hope you enjoyed this journey with us. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more travel stories. Until the next trip, stay curious and keep exploring. Bye bye.